Hello everyone and good morning and welcome to the day 2 session. When I'm talking about the day 2 session of DevOps means in the yesterday's session we have learned about the what exactly the Git and GitHub related activities. Okay, but today we are going to move into the practical part of the Git and GitHub from with you guys. Okay, it's not like guys only theory session because you are going to become a developer by doing this all things means we are learning the development activities as a DevOps part because in the DevOps there is a dev keyword, there is a ops keyword. When they combine, then only you will become a DevOps engineer. So you have to be aware about the development activities. That's why I'm teaching the Git and GitHub. I hope everyone is aware about this point, right? हम लोग क्यों GitHub Jenkins why we are learning because we want to understand what the developers are doing it based on that we will perform our activities as well. Cool, thank you. And in the yesterday's session, okay, I'm sharing my screen as well. Okay, in the yesterday's session, we are very clearly aware about what exactly the Git is. Guys, whoever has missed it, whoever is not aware about it, I want you to check the previous session as well. It is must. Okay. What exactly the Git is, what exactly the GitHub is, because this is a day 2. Okay. And in that, we have already clear up the things why the version control is required. If you will not maintain the version control, I want someone to raise your hand, unmute and speak up. If the version control will not be there, what will be the problems we may face? Can anyone give me the answer? कोई answer दे पाएगा? Okay. And why Git and what is Git? These are the two questions I have got to ask. Anyone want to give the answer? Please go ahead. बोलो यार, please. राइटिंग नहीं, आई डोंट वांट यू टू राइट, राइट नहीं करना. ओके, राइट तो कर लेंगे. शहनवाज खान, यस गो अहेड. If we will not So for maintain our code, my question, Shanavas, listen to the question. If we will not maintain the code into the versions, what will be the problem? Go ahead. so client requirement can be changed anytime. It can be changed anytime, and if we If control the which is the version, answer though? If the client requirement get changed, okay, then so we can use if we are using version control, we can use previous version or the latest version as per the client requirement. correct. If we are maintaining the versions of the code, we can easily back to the previous version and we can just run one command, git revert, and we will go to the previous version with the commits. Cool. Thank you. Yep. Thanks a lot. Okay. What is Git? The next basic interview question. कोई नहीं पूछेगा इंटरव्यू में. Okay. But भाई आना चाहिए बोलना. Go ahead. Git is Where a Hmm. code is stored in a PC. Rishikesh or Yashin came. Guys, raise your hand and then give the answer. Yeah, Yasin bhai, bolo. Uh, Actually, Git is a version control system which is installed in our machine locally. We have to Command, install the Git software application in our local machine. Correct. Then it's a command line tool. it's a command line. We majorly use the command line version of the Git. Very good. Yes. And That is it is called Git bash. Okay. Or a maintain a version which previous and current version. it We can easily maintain the version into the staging area. area. Guys, answer ऐसे देना पड़ेगा. It maintain the version of the code into the staging area. ठीक है यासीन? और बोलो. Yes. Good. Thank you. Karthik, 9 points. I want a new points. Anurag, I want a new points. Yes. अनुराग कोई न्यू पॉइंट है? Cool. नहीं है? Okay. चलो. Very Mostly basic simple Yasin question. told sir. What is GitHub? What is GitHub? हाँ ऋषिकेश राकुल. Ayub, go ahead. बोलो. Yes, it is a centralized like repository where you can store your like repos from local to the centralized Store location. our code in form of Yes, repos. Okay, अच्छे yes, से आंसर दो प्लीज. भाई इंटरव्यू क्रैक करना है कि नहीं करना है? yes, sir. कि इंटरव्यू में बैठना है और रिजेक्ट होके आना है विद इन फाइव No, sir. मिनट No, sir. गाइस, व्हाट इज योर इंटेंशन? इंटेंशन क्लियर होना चाहिए. ओके, कि इंटरव्यू में जाना है, क्रैक करना है, या सिर्फ इंटरव्यू को देख के आना है. ओके, जितने अच्छे आंसर दोगे ना, यू विल गेट ए बेटर पैकेज. योर कीवर्ड शुड बी बेटर. यस अयूब, गो अहेड. Yeah, so it is a like centralized location where you can like save your data over the cloud, right? कोई So that डेटा is सेव नहीं होता. सेव द कोड. ओके, sorry, मेंटेनिंग द save the code, वर्जन ऑफ द maintain the कोड. code, maintain the हाँ, code from the करेक्ट. local Why repo. GitHub? Why GitHub?
because if you lost the data from your local machine, we can retrieve from the centralized location. That's the Guys, reason I we want 5, 6 reasons why GitHub. What are the benefits of using the GitHub? He told centralized location. Okay, cool. and Others, raise your hand and speak up. Others, raise your hand, come up on the camera and speak up. Bolo. Harushikesh, bolo. What is the second benefit of GitHub? Used for collaboration among different Yes, teams. it's a centralized location. Multiple developers can collaborate into the single location. Transparency and visibility will be there. Very good answer. Yes. Or Yeah, bolo. it gives you transparency. It gives the transparency. Correct. Third point. Fourth, fifth, guys, some more benefits. Anurag, Anyone yes. can, yeah, Change the anyone rollback to developer. previous version. Okay, Sunny, go ahead. The open source community is there. It's an open source. Okay. Yes. Okay. GitHub And is a CF open source. Don't call as a GitHub as a open source. Okay. the GitHub is community, purely open a source Microsoft. community. Mostly cloud-based. It's a cloud based. Okay. No need to install CI/CD anything on the local integration. machine. CI/CD integration is easy. अभी नहीं, बाद में. We can use multiple branches to avoid conflict. To track GitHub is a service as well. Guys, Shaukat, guys, come up on the camera तो पता चलेगा कि कौन आंसर दे रहा है. Yes, Karthik, Vedant, Rugvesh. Yes, Rugvesh Vaibhav. Yes, बोलो. GitHub is a service as well. GitHub is a service. It is a ठीक है. secure way मजा to नहीं आएगा दोस्त. इंटरव्यू नहीं निकलेगा अगर ऐसे आंसर दोगे तो. Okay. Cool. GitHub चलो, is let me. secure. We can Uh, it is a secure way to store our code. वर्जनिंग के लिए भी यूज होता है. इट्स आल्सो फॉर वर्जनिंग व्हाट डेवलपर हैज व्हाट कमिटेड व्हाट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दैट. Okay, fine. Makes sense. Okay, good. चलो, let me share my screen. Okay. भाई पढ़ना पड़ेगा. बिना पढ़े नहीं कर पाओगे. Okay. क्योंकि ये आंसर अगर 10 लोग भी एक साथ इंटरव्यू में गए ना तो भी एक सिंपल सा आंसर गिट और गिटहब का आंसर नहीं दे पा रहे हो. ठीक है. दिस इज द करंट सिचुएशन. कल देखते हैं इसको. ठीक है. आफ्टर 90 मिनट्स पढ़ने के बाद क्या डिफरेंस आता है. ओके. चलो, माय टर्न. Why Git? If you want to maintain the code into the versioning, okay, if you want to push the code from local machine to the centralized location, then we must have to use the tool Git. Okay, because why only Git? Is there any another tool available into the market? I will directly say, guys, there is no much competition in this part. Okay, 90% of the majority is getting used by the Git only. तो भाई तुम्हारे पास choice ही नहीं है, तुम्हें Git ही पढ़ना है. Okay. Can you write into the chat box how many commands of Git you are aware till now? कितने commands अभी तक पता है और कितने पढ़ना है? Guys, if it is zero, मतलब नहीं लिख रहे हो मतलब zero, okay? And you have to learn only 10 to 15 Git command. आज ही पढ़ना है. We have to learn the 10 to 15 Git commands. If you learn the 10 to 15 Git commands, that's it. तुम्हारा 90%, 80% of the Git will be understand. बाकी जो work है, other work we will use with the help of UI. GitHub, no, sorry, not UI. We have to understand the 80% or 90% of the Git related activities with the help of 10 to 15 commands में हो जाए. Okay, cool. What about GitHub? GitHub के कोई commands होते हैं? What about GitHub? Any GitHub CLI? Yes, no into the chat box. Yes, no into the chat box. No, 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 no. My God. भाई इस GitHub का भी CLI होता है. There is a CLI for GitHub as well. Okay, which is not at all required. GitHub can be maintained, perform every activity from the UI itself. Okay, so what I will do, 90% or 99% of the things we will do with the help of GitHub UI itself, and 1% of the thing to understand the GitHub as well, we will do that. Okay, cool. Now I was asking the question, what exactly the GitHub is? GitHub is a centralized location. आराम से बोलो. Okay, कोई जल्दी नहीं है. GitHub is a centralized location where developer push the code and it will be maintained into that place. Maintaining. अब उसमें what is the DevOps role? Creation of repos, creation of the branch. अभी नहीं पता branch, कोई बात नहीं, आज सीखेंगे. Creation of repos, creation of branch, branch protection rules, branch security related activities has to be taken care by the DevOps engineer. If developer is not following, okay, let me stop the screen. If developer is not following the best practices, okay, then we have to inform to the developer
This is the best practice which we have to follow, and based on that, it will be taken care by the DevOps team. Developer will write the code, but maintaining by the DevOps engineer is our responsibility. Understood? So if someone asks you into the interview as a DevOps engineer, why you are understanding or what is the use of Git or GitHub for you, you can say we have provided the best practices to the developers, and developers is following that and maintaining the code into the centralized location. Why? Why centralized location? Again, interviewer can ask this question, why centralized location? Because it will maintain the transparency. We can able to check which user or which developer has written what code. If any mistakes or if any merge conflict, if any issues happen into the code, okay, it can be revert. Or if the requirement got changed that is already developed, then we can revert the code into the previous version with some few commands. Okay. Or if you know the command directly, you can say with the help of git revert, we can revert into the previous commit. That all you have to speak. Understood? Yes, no? Understood? भाई ऐसे बोलना पड़ेगा. जब तक ऐसे नहीं बोलोगे ना, what will happen? तुम्हारे क्या होता है? See, I will tell you the reality. Okay? आप इंटरव्यू देने जाते हो, you went for the interview, within 15 मिनट्स में बाहर आ जाते हो, या बोलते हो इंटरव्यू में पूछा ही नहीं. भाई तुमने ऐसे आंसर दिए, that's why he understood कि आगे का टाइम वेस्ट करके कोई फायदा ही नहीं है. Okay, so you have to give the answer in a very polite way, very simple way. Interviewer को समझ में आना चाहिए. Then only he will go to the next or tough questions. Okay, cool. मेरे को अभी लास्ट वीक एक स्टूडेंट ने बोला था, विकास सर आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, ओके, और 15 मिनट में ही टोल्ड कि ओके वी विल गेट बैक टू यू, एंड आई एम श्योर कि 15 मिनट्स में कोई इंटरव्यू नहीं होता, ही विल नेवर गेट बैक टू मी. ओके, आई टोल्ड व्हाट ही आस्क्ड. Sir, he asked, what is Docker? Okay, what is Docker? मैंने बोला ठीक है. What answer you given? He told Docker is a container. मैंने बोला बस ठीक है, इसलिए नहीं पूछा उसने आगे की बात. Okay, so you have to explain in a proper way. Okay, very simple question. That's it. Okay, cool. Cool. चलो, now we will go. हमने कल थ्योरी देखी थी. Now we will move into the practical side of the Git and GitHub. Okay, cool. If I will ask, guys, आज हमें ये समझना है how the SCM works. Okay, anyone here, कोई है जिसको समझ में आ रहा है? Anyone here, raise your hand and बोलो कि सर मुझे समझ में आ रही है ये चीज. नहीं आ रही? Anyone? 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 नो वन. चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं आ रही ना, इसलिए मैं पढ़ाने आया हूँ, इसलिए आई एम हियर टू एक्सप्लेन. सनी मैं करता हूँ एक्सप्लेन. ओके, कूल. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दैट फंडा. ओके, विद स्मॉल स्मॉल पार्ट. ओके, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एक साथ कर दूंगा. आई विल एक्सप्लेन यू विथ दिस थिंग. ओके, इससे भी पहले ये सिंपल सी चीज देख लो. ओके, गिटहब इज अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन वेयर द कोड हैज टू बी मेंटेन. मतलब हमें यहाँ पे रेपो बनानी है. रेपो. ओके, रेपो विल बी क्रिएटेड इनटू द गिटहब. Okay, and multiple developers are there. They will push the code into the centralized location. Okay, और इस कमांड को कहते हैं push. push मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा. If you run the pull command, the code will be get downloaded into the local machine. Understood? Push और pull समझ में आया? Yes, no? That's it. अगर push and pull समझ में आ गया तो आगे की कहानी समझ में आ जाएगी. Okay, cool. Now I'm going to do this practical in front of you. Not me. Everyone will do. सब करेंगे. Okay. Go to your GitHub account. आ जाओ अपने GitHub account पे. GitHub.com. Okay. Log into your GitHub account. If you logged in, type logged in. Logged in कर लिया है तो type logged in. Logged in, 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 logged in. Perfect. Very good. Thank you for logging. Okay. Now यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है. ओके, न्यू का ऑप्शन आ रहा है. क्लिक ऑन द न्यू एंड क्रिएट ए रेपो. कल हमने बनाई थी. ओके, डोंट सेव इट. अभी सेव नहीं होगा. क्या होगा? क्रिएट रेपो मत करना. ओके, जस्ट गिव द नेम माय फर्स्ट बैच 42 रेपो. मैंने नाम दिया. यू कैन ऑल्सो गिव सम नेम. माय फर्स्ट रेपो. ओके, गिव द नेम. ओके, एंड विजिबिलिटी शुड बी पब्लिक. तभी सबको दिखेगी. इट विल बी विजिबल फॉर एवरीवन. अगर प्राइवेट कर दोगे, इफ यू विल मेक द प्राइवेट फ्रॉम हियर, ओनली यू विल एबल टू सी. ओके, सो आई वांट यू टू मेक इट पब्लिक. पब्लिक ही रखो. डिस्क्रिप्शन, आई विल पुश द कोड फ्रॉम माय वर्क स्टेशन.
भाई लैपटॉप भी बोल सकते हो तुम, यस यू कैन से लैपटॉप ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वर्क स्टेशन बोलो, इट विल बी बेटर, यस नो, give the better keywords. Okay, cool. Okay, and here add readme file को off रखना है. Okay, yesterday we created on and readme file automatically created, आज नहीं बनाना है. Okay, and I'm clicking on create repository. As soon as I click on create, is this type of page came? आया guys, came, just type see into the chat box. आ गया, जगदीश का आ गया, हर्षल का आ गया, योगेश का आ गया. ओके, सुभाष का आ गया, अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया, अयूब, प्रमाद, रोजेश, शांतनु, अखिलेश, वेरी गुड, थैंक यू. ओके, नाउ ये जो 6-7 कमांड, इन सब कमांड्स को कॉपी करके, कॉपी दिस ऑल कमांड्स अपने नोटपैड, यही एग्जीक्यूट करना है. और हमारे आज 10 कमांड अभी हमने पढ़ ली, नेक्स्ट 10 मिनट्स हो जाएगा. ओके, गुड. नाउ कॉपी दैट ऑल कमांड्स. ओके, ओके, ये रहे. ओके, नाउ रेज योर हैंड अगेन गाइस. फर्स्ट लाइन किसको समझ में आ रही है? हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन? किसको आ रही है? रेज योर हैंड, कम अप ऑन द कैमरा एंड गिव द आंसर. कार्तिक, कार्तिक तुम कैमरे पे नहीं हो, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं. समवन एल्स, अविनाश यू आर नॉट अ. कार्तिक गो अहेड, फॉलो. व्हाट इज दिस? क्या होगा इस कमांड से? हाँ कार्तिक गो अहेड, आंसर. हम्म, कार्तिक भाई अनम्यूट करो. अविनाश नहीं तो अविनाश गो अहेड, अनम्यूट. Yeah, this Readme will file. display the content of my first batch 42 repo readme file रॉन्ग readme.md. आंसर, नहीं होगा सिलेक्ट, चलो नहीं होगा. ओके, नहीं है अच्छा आंसर. आंसर इज करेक्ट, बट यार भाई अच्छे से बोलना पड़ेगा. अनिल Yeah, भाई, it is a व्हाट विल हैपन string. विद दिस? It is a string. Will We'll put print. it into readme dot file, and it will print into the terminal. ठीक है, चलो और अच्छे से, और अच्छे से आंसर. आई नो तुम्हें आंसर पता है भाई, तुम्हें आंसर पता है. हाँ Sir, it will राहुल. redirect data, sir. My first Hello. batch, so it will read. It will it will go to readme file. Basically, It जो says echo command first commit एक एक on. करके, वन बाय We are वन गाइस, वन बाय वन, redirecting. वन बाय वन, वन बाय वन प्लीज. Redirecting. ओके, Because मर्मरिंग it साइंस will से काम अदरवाइज. it will add the content my first batch 42 repo into the readme.md file. Okay, it will create a readme file. Okay, and it will redirect the output Oh, of this data into this file. That's yes. it. Okay, that's it. भाई इतना सिंपल है. Echo, it will print the thing Print. and it will redirect the data into the readme file. Good, ठीक है. Second command git init क्या होगा? Git Raise your hand. initialized. It will initialize the empty repo. भाई पूरा Yes. आंसर दो. ओके, लिखा है ना रिज्यूम में Okay. तुमने, गेट गिटहब डॉकर कुबरनेटिस जावा पाइथन सब लिखा है ना, राइट? तो उस बेस पे आंसर तो लिखा है, तो बोलो. ओके, चलो गेट इन इट. चलो अब हम लोग ये 2 पॉइंट को समझते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं. ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल गो, मैं अब एक नॉर्मल से वर्क स्पेस में, नाउ आई एम कमिंग टू द फोल्डर. ओके, फोल्डर मतलब अच्छा कीवर्ड इज ए वर्क स्पेस. ओके, डेवलपर्स आर टेलिंग इट्स ए वर्क स्पेस. तो व्हाट आई एम डूइंग इट, यहाँ पे मैं एक अपना गिट विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ. आई एम ओपनिंग ए विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, या यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ. एक न्यू Workspace. फोल्डर बनाया. दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस. डोंट कॉल एज ए फोल्डर, अब वर्क स्पेस कहो, ठीक है? वर्क SPAC फॉर जावा प्रोजेक्ट, कोई जावा का प्रोजेक्ट है उसके लिए वर्क स्पेस बनाया, मीन्स एम्प्टी फोल्डर बनाया. ओके, राइट क्लिक, आई ओपन दैट फोल्डर इनटू द विजुअल स्टूडियो कोड. मैंने फोल्डर को ओपन किया. नाउ नथिंग इज देयर इनटू दिस, कुछ नहीं है, करेक्ट? नथिंग इज देयर, यस नो? ओके, अविनाश बोल रहा है कमांड पेस्ट कर दो. अविनाश भाई कोई कमांड पेस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने जनरेट करोगे. ओके, दिस कमांड्स स्पेसिफिक फॉर माय अकाउंट, तुम्हें तुम्हारे अकाउंट के जनरेट करने पड़ेंगे. ओके, इफ आई विल गिव दिस कमांड तो तुम्हारा कोड मेरी रेपो में आएगा. अंडरस्टूड? ओके, सो यू हैव टू जनरेट योर ओन कोड. ओके, तुम्हें अपने कमांड जनरेट करने पड़ेंगे. कूल, थैंक यू. ओके, नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे रखा, इधर आई वेंट एंड आई वेंट इनटू दिस प्लेस. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, जावा का प्रोग्राम. ओके, HELLO हेलो वर्ल्ड डॉट जावा. मैंने यहाँ पे एक जावा का प्रोग्राम. अंडरस्टूड? मतलब एक फाइल बनाई. आई जस्ट क्रिएटेड वन फाइल जिसका एक्सटेंशन है जावा. यस नो? गई समझ में आया? राइट इनटू द चैट बॉक्स, समझ में आ रहा है? यस नो? आई जस्ट क्रिएटेड ए एम्प्टी फाइल, एक फाइल बनाई है जिसका एक्सटेंशन है जावा. यहाँ पे मेरे पास AI है,
कंट्रोल शिफ्ट आई, को पायलट विल बी विथ मी। ओके, मैं उसको बोल रहा हूँ राइट राइट जावा प्रिंट प्रोग्राम, प्रिंट PROGRM and PRIN print WL welcome to DevOps, okay, Day-2 session। ओके, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, write a Java print program and print the welcome to DevOps, okay, DevOps Day-2 session। Okay, I just written this is called prompt, ये एक prompt लिखा है। I will give this prompt, okay, I am giving this prompt और यहाँ पे इसको run करो। Okay, what he will do, he will write, okay, it will enable the cloud access, ठीक है, करेगा obviously। Okay, and now it will enable, he is writing something, he is writing the current file जिसमें कुछ नहीं लिखा, and he created a program for me। कितने लोगों का प्रोग्राम लिखा गया? How many people has written the Java program with the help of AI, with the help of what we can say, with the help of Copilot? बोलो, हो गया? माइन हो गया, सिद्धार्थ का हो गया, योगेश का हो गया, बहुत बढ़िया। हर्षल, क्या बात है, क्या बात है यार, भाई मजा आ गया। कूल, ओके, परफेक्ट। अजय का हो गया है, हर्षल का हो गया है, शौकत का हो गया है, सिद्धार्थ का हो गया है, अयूब का हो गया है। 10-15 पीपल ने विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट यू हैव रिटन। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। ओके, आई एम गिविंग अगेन दिस प्रॉम्प्ट, सिर्फ इतना सा लिखना है, राइट ए जावा प्रिंट प्रोग्राम एंड प्रिंट द वेलकम टू द डेवऑप्स 2 सेशन, दैट्स इट। ओके, मेरा प्रोग्राम लिखा गया। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज, इस प्रोग्राम को मुझे पुश करना है गिटहब। Okay, you are working as a pure developer now। Okay, now my requirement is I want to push this into the what we can say into the GitHub। उसके लिए who will help me out? कोई help कर पाएगा मेरी? Anyone? Raise your hand। कोई help कर पाएगा genuinely? हेलो सर। जिसको आता है please unmute, raise your hand, come up on the camera and then give the answer। कोई दे पाएगा? अयुब भाई बोलो। यस योगेश। First of all, we need to run the command git init, git कहाँ initialize पे रन करना है? कहाँ पे रन करना है? Where I have over to run the this command? over the like git bash, under the git bash। चलो ठीक है, First मेरे go to साथ दो the ऑप्शन है मेरे पास। file Also location. write here कार्तिक, terminal. विनोद, Open terminal here, and from here itself we can रंजीत, run. रंजीत, वेट, म्यूट। ओके, देर आर दो ऑप्शन है मेरे पास। आइदर आई कैन यूज दिस विजुअल स्टूडियो टर्मिनल, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, आयुब वाज टेलिंग कि सर यहाँ पे गिट बैश ओपन कर लो और यू कैन डू इट। दोनों वे आप करेक्ट, दोनों तरीके सही है। ओके, बट मैं गिट से सिखाना चाहता हूँ। ओके, सो आई एम कमिंग हियर एंड आई एम ओपनिंग द गिट बैश हियर। गाइस ओपन योर गिट बैश इनटू दिस लोकेशन। ओपन कर लिया है? ओपन योर गिट बैश कर लिया? यस नो, यस नो, यस नो। योगेश का हो गया है, गुड। फटाफट दस। अनाय, मेक श्योर जहां पे वो कोड है एलएस करके टाइप करके देख लो, वो कोड आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। परफेक्ट, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन नंबर 80, ओके 80, ओके, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इट, मैं इसको ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग माई लाइन नंबर 80, ओके, और मैंने यहाँ पे पेस्ट करी। व्हाट विल हैपन विद दिस? अगेन रिपीट द आंसर। राहुल, यू नो द आंसर, अनम्यूट करो और बोलो। खालिद, सिद्धार्थ बोलो। व्हाट विल हैपन एज सुन एज आई पेस्ट दिस थिंग, एज सुन एज आई प्रेस एंटर, क्या होगा? It will create a file, readme.md, and redirect that output in the file. परफेक्ट, इट विल क्रिएट ए एम्प्टी फाइल, रीडमी फाइल। आई प्रेस एंटर, ऐसे ही मैंने प्रेस किया, रीडमी फाइल बन गई और उसके अंदर लिखा है माय फर्स्ट बैच 42 प्रेप। डन गाइस, डन हो गया। हैव यू एग्जीक्यूटेड? बहुत बढ़िया। शौकत अली बोल रहा है अनम्यूट नहीं हो रहा है। शौकत, क्यों अनम्यूट करना है ये बताओ? क्यों अनम्यूट करना है? ओके, चैट में लिखो। ओके, अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। ओके, अभी मरमरिंग हो जाती है। ओके, कूल। नाउ git init, copy the git init command
Okay, and paste the git init. क्या होगा? What will happen with the git init command? अनिरुद्ध तुम्हारे कमांड नहीं चाहिए, git init से क्या होगा? Guys, raise your hand. राहुल का नहीं, और कोई? Yasin, go ahead, give me the answer. Yasin, give me the answer. Sir, it is a initialize the repo. Incomplete The answer, git those. init command, it is Incomplete answer. initialize in a. Okay, sir, I will try to Incomplete check. answer है. Incomplete है. चलो, शौकत ने बोला था, शौकत को आंसर देना है. शौकत, unmute yourself. संदीप, unmute yourself. बोलो. Sir, it will initialize the Git repository. So basically, the local folder it will turn into a Git repo. So we can add our commands. Okay, ये भी थोड़ा सा incomplete है. It will initialize the Git repo. Okay, it will initialize the Git into the local machine or into this workstation, and it will create an empty folder. .git folder बन Empty गया. folder, Okay, sir. Yes. it will create a empty .git, not empty, Git folder. .git folder. Okay, what is .git folder? Again, interview question. Okay, in the .git folder, hooks, info, object, references, logs, and all this information will be saved into this. Means the memory of the Git will be saved into this Git folder. Understood? Type you into the chat box. Type you into the chat box. Yeah. Perfect. Thank you. Thank you. Cool. Okay. Now, what I'm doing it, मैं यहाँ पे git add readme file कर रहा हूँ. Guys, answer दो. Incomplete दो, wrong दो. पता तो चलेगा. Akhilesh, yes, go ahead. What you want to say? क्या होगा? What will happen with this command? Yes, after adding git add readme of .md file, it's go to a staging area. मत बोलना इंटरव्यू में ये लाइन. ठीक है. और कुछ? एनीवन? संदीप, यस, गो अहेड. चैतन्य, यस. संदीप, खालिद. So it What? will It will add readme.md file to be pushed to the main repo, our centralized repo. अच्छा, इसी से पुश हो जाएगी. बहुत बढ़िया. रॉन्ग आंसर अगेन. ठीक है. लग रहा है दोस्त, वी फील कि यार बहुत सिंपल चीज है, विकास सर क्या पढ़ा रहे हो, बट यू फील कि सब आंसर्स गलत आ रहे हैं, राइट? या चैतन्य, गो अहेड, बोलो. Mute. Yeah. So when we enter git add readme.md, what it does is it adds readme.md into git staging area. ठीक है, करेक्ट. ठीक है, ये सही है. फिर भी ओके, I इट mean, विल ऐड द फाइल, meaning बट of माय the email रिक्वायरमेंट इज, with wait, result. but my requirement is I don't want to add only readme file. उससे पहले मैं यहाँ पे चलाऊंगा git status command. Okay, status. As soon as I will run the git status, you don't have to run, मैं दिखा रहा हूँ. Okay, I'm running the git status command. Okay, as soon as I run the git status, it is telling two files are coming into the red color. He don't know, he was not able to track it. Okay, it will not able to, it is not able to track it. Now I will run the command git add star. Okay, star is a wildcard character. Whatever the files are there, it will take all the files. It will take all the files. Git add star, copy, and then now what will happen? It will add all the files. Okay, and means indirectly it will say that I have tracked the files. पहले ये red color में थी. Okay, before add, अभी git add command run करने के बाद it become the green color, means all the file has been tracked. Understood? Yes. Understood? Yes, sir. भाई टाइप यू इनटू द चैट बॉक्स अगर समझ में आया तो. दिखने में कितने सिंपल दिख रहे हैं, राइट? ओके, और अभी मैं बोलूंगा 10 लोगों के प्रैक्टिकल फेल होंगे यहाँ पे. ओके, जस्ट सिंपल सिंपल थिंग में. ओके, कूल. नाउ कमिट. इंटरव्यू क्वेश्चन. व्हाट इज कमिट? गो अहेड, गिव मी द आंसर. बोलो. या, गो अहेड. वेदांत, यस. अनम्यूट. Uh, So commit is help us to save the changes what we do in the workstation, Okay, as thank well you. as we Thank can you for add wrong the answer. comment. भाई नहीं पता तो मत दो ना, मत दो. डोंट गिव द आंसर इफ यू डोंट नो द आंसर. जबरदस्ती थोड़ी ना है. ओके, रंजन कुमार, चलो गो अहेड गाइस. रंजन बोलो, व्हाट इज गिट कमिट? So git commit, those file have the tracked that have to commit that file.
The tracked अच्छे से file बोलो, we have to. अच्छे से बोलो, one more time. Sir, those file have to in the हिंदी में staging बोल दो area. पर आंसर सही दो. ओके, अखिलेश, अदरवाइज अयूब. हाँ, सुनील. Sir, when we are committing the code from the dev2 stage, that will be called as a commit. चलो और कुछ, चलो लीव इट गाइस, माय टर्न. ओके, आई एम टेलिंग दैट माय फर्स्ट स्टेप. ओके, मतलब एक कर्सर होता है. ओके, आई विल शो ऑल दिस थिंग्स. ओके, देयर इज ए कर्सर और देयर इज ए पॉइंटर. द पॉइंटर विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, तो आई एम कमिटिंग दैट यस दिस इज अ कमिट. मेरा जो फाइनल कोड है दिस इज कमिटेड. ओके, एंड आई एम गिविंग द नेम माय फर्स्ट कमिट. ओके, तो उसके बाद ये कोड विल बी सेव्ड. ओके, नाउ आई एम कमिंग हियर. I'm coming here and I'm just executing this command. Okay, git commit. Okay, and as soon as I will commit, a commit IDs will be generated. Here a commit की IDs numbers has been generated for the particular file. अब इस फाइल के ऊपर एक save number या pointer ID has been created. This pointer ID से हम लोग सारी चीजें ट्रैक कर पाएंगे कि what happened, what has been written, what has been changes happen because of this commit, और commit ID से हम लोग ये चेक कर पाएंगे. Cool. Okay. उसके बाद नेक्स्ट इज git branch -m main. Okay, abhi I am doing all the activity into my master branch. At this point I am doing all my activity into the master branch. मैं master branch से main branch change कर रहा हूँ. Okay, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन होगा. विकास, why you are changing from master branch to the main branch? किसी को पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद पता चल जाएगा. ओके, आई जस्ट चेंज फ्रॉम मास्टर ब्रांच टू द मेन ब्रांच. दैट्स इट. ओके, कूल. नाउ आई वांट टू पुश द कोड. ओके, चलो मैं इसका पूरा पिक्टोरियल दिखाता हूँ. ओके, इट विल टेक 13 more seconds, but you will learn something new. ओके, समथिंग स्पेशल पार्ट. ओके, जो कोई नहीं सिखाता. ओके, बहुत बेसिक है. ओके, आई एम जस्ट टीचिंग यू इन दिस वे. ये मेरा कोड है. ओके, आई एम टेकिंग इनटू माय पेन. दिस इज द पेन. मैंने यहाँ पे इन माय लोकल मशीन एक जावा फाइल बनाई थी. ओके, और रीडमी फाइल बनाई थी. करेक्ट, राइट. ओके, एंड देन उसके बाद आई रन द कमिट कमांड. जैसे ही मैंने से पहले मैंने स्टेटस चेक करा एंड आई मेड द कमिट. जैसे ही मैंने कमिट कमांड रन किया, एज सून एज आई रन द कमिट कमांड, माय कोड हैज बीन वेंट इनटू द स्टेजिंग एरिया और इसका एक कमिट आईडी हैज बीन जनरेटेड. ओके, कूल. एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे हियर देयर इज अ मेन ब्रांच. यहाँ पर मेन ब्रांच है. हियर देयर इज अ मेन ब्रांच एंड इन माय लैपटॉप, in my workstation, it is a master branch. So what I did, I run this command. मैंने ये command run किया, git branch -m, and it has been changed the branch to the main branch. Then मेरा यहाँ पे भी main और यहाँ पे master से to main हो गया. Guys understood? Yes, no? समझ में आया? Yes, no? Okay, cool. Now after that what happened? Now I'm telling कि I want to push my code into this location. Okay, in this location means ये मेरी location है. This is my location जहाँ पे मुझे कोड को पुश करना है. Means I'm adding the location. ये repo की location है. This is my repo location. Okay, this is my repo location. ये रही. Okay, now what I will do it, मैं यहाँ पे add कर रहा हूँ. Guys, copy your line, git remote add origin. Okay, और यहाँ पे आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो. And as soon as you will paste, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, but it will be saved. The location has been saved. और उसके बाद लास्ट कमांड आएगा git push u -origin main. पुश कर दो कोड को मेन ब्रांच में. ओके, आई एम कॉपिंग दैट. नाउ विथ origin, ये वाली रिमोट origin, रिमोट लोकेशन, REMOT रिमोट लोकेशन सेव हुई. उसके बाद यहाँ पे कमिट कोड इज ऑलरेडी हियर. दिस मेन और जावा वाला कोड जो है, दिस कोड as soon as I run the commit command, ये कोड यहाँ पे तो था, it has been came into this place as well, क्योंकि मैंने यहाँ पे commit कर दिया था. Okay, now as soon as I will run the push command, as soon as I will run the push command, code will reach into the remote location. Okay, कौन सा command है विकास सर? ये रहा push command. I am taking the push command. Okay, और मैं यहाँ पे execute कर रहा हूँ. Okay, and as soon as I pushed, मेरा code has been pushed into the centralized location. Okay, now I'm going here. Earlier I was looking like this. Earlier I was looking like this. ऐसा दिख रहा था. I'm duplicating this.
एंड यू कैन सी हियर, यस योर कोड हैज बीन पुश, मेरा जावा का प्रोग्राम जो मैंने 3 मिनट लिए तुम्हें समझाने में, एंड इट हैज बीन पुश इनटू द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। कितने लोगों का हो गया? टेल मी हाउ मेनी पीपल हैज डन। शेयर योर रेपो, अपनी रेपो शेयर करो, शेयर योर रेपो इन द चैट बॉक्स। रेपो चाहिए दोस्त स्क्रीनशॉट के साथ, अदरवाइज सेंड योर स्क्रीनशॉट इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप। शौकत नहीं हुआ कोई बात नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड में एरर आ रहा है कोई बात नहीं, वहां पे हेलो लिख दो, हेलो पुश कर दो। ओके, अब अनुज ने देखते हैं, अनुज करा हुआ है, ठीक है। सिद्धार्थ का ओपन कर रहा हूँ, ओके। संदीप ओपन कर रहा हूँ मैं, विष्णु का ओपन कर रहा हूँ, ओके। अनुज क्या बात है भाई, कोड लिखा कि नहीं लिखा देखें जरा अंदर। क्या बात है, कोड भी लिख दिया यार इस बंदे ने तो, ठीक है गुड। संदीप, ठीक है, संदीप का भी लिखा गया कोड, वेरी गुड। विष्णु, ओके, विष्णु का भी हो गया, क्या बात है। अनय, चलो देखते हैं। सोमू, ठीक है। फेल, हाँ एक बंदे का है, योगेश का फेल। योगेश तुमने ना कल कॉन्फ़िग नहीं किया था, ओके। तुमने कल की क्लास में वो कॉन्फ़िग वाला कमांड नहीं रन किया था। कॉन्फ़िग रन करो, एंड अगेन यू हैव टू गिव द यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड दो तुम्हारे गिटहब का, देन ओनली इट विल वर्क, ठीक है। सोमेश, सोमू ने जावा फाइल बनाई, वेबबुक बनाया, कुछ तो अलग बनाया, ठीक है। पता नहीं कुछ कुछ तो कर दिया इसने बंदे ने, ठीक है। गुड, ठीक है, वेलकम सोमू टू जावा, बढ़िया, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। ये बंदा है अर्णव तिवारी, देखते हैं क्या करा इसने। यस परफेक्ट, वेलकम टू द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है। वेदांत का हो गया, जगदीश का हो गया है, ओके। वेदांत, खालिद, चेक कर लेते हैं। मैन गुड यार, गुड, कोड तो कुछ हो गया है, ओके गुड। जनार्दन, राइट योर क्वेश्चन इनटू द चैट बॉक्स अगर कुछ क्वेश्चन है तो, ओके कूल, थैंक यू, ओके कूल। गाइस नाउ आई कैन सी कुछ लोगों ने कर लिया, कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ इट्स ओके, ओके कोई बात नहीं, मैं फिर से कर रहा हूँ, ओके डू इट अगेन विथ मी। कुछ नहीं लगेगा, 30 मोर सेकंड, ओके 1 मिनट और लगेगा, ओके। आई एम कमिंग टू द क्लाउड डेवऑप्स रेपो, ओके। आओ होम पेज पर, जिसको क्विकली एक बार और करना है, कम टू योर रेपो, ओके अपनी रेपो पे आओ, ओके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। माई सेकेंड पुश, ओके यहाँ पे गया, माई SECOUND सेकेंड पुश, ओके सेकेंड रेपो, ओके 42 पेज की, ओके मैंने ये लिया, ओके। गाइस गो टू गिटहब और न्यू पे जाओ, ओके ओके। कोई की कह रहा है, प्रशांत भाई अभी भी तुम कमांड मांग रहे हो, तुम मुझे सुनो प्लीज, प्रशांत करने की कोशिश करो, ओके। कोई कमांड की जरूरत नहीं है, ओके। तुम प्रैक्टिकल करो, कमांड अपने आप आएंगे, ओके। सी, यू हैव टू गो इनटू दिस प्लेस, ओके। गाइस लिसन मी, मेरी बात सुनो प्लीज, ओके। आई एम स्टॉपिंग द चैट ऑल्सो, मैं चैट रोक रहा हूँ, ओके। कम टू द github.com/new पे आओ, ओके। कम इनटू दिस प्लेस, यहाँ पे रेपो का नाम दो, ओके, गिव द रेपो नेम, यहाँ पे सेकंड पुश दे दो, सेकंड रेपो दे दो, ओके सेकंड रेपो दे दो, okay? और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर, दैट्स इट। जैसे ही क्रिएट रिपोजिटरी पे पुश करोगे, तुम्हारी रेपो और सारे कमांड, जो बंदे बोल रहे हैं ना सर कमांड दे दो कमांड दे दो, भाई कोई कमांड देने की जरूरत, कमांड ऑलरेडी है, ठीक है। कूल, कमांड आ गए, उसको नोटपैड पे कॉपी कर लो, कॉपी द कमांड्स इनटू द नोटपैड, ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड, मैं अभी ये सब बंद कर देता हूँ। विजुअल स्टूडियो टफ हो गया कुछ लोगों के लिए, AI चलाना टफ हो गया, इग्नोर, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। हम यहाँ पे गए, एक फोल्डर बनाओ, क्रिएट ए न्यू फोल्डर, सेकंड फोल्डर बना रहा हूँ मैं, ओके। एक फोल्डर बना रहा हूँ, ओके, न्यू FOLDR, सब कुछ न्यू बनाना, न्यू फोल्डर, ओके। उसके अंदर गए, एक टेक्स्ट फाइल रख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ओके। कोड लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, टेक्स्ट फाइल लिखना तो आ जाएगी, माय जावा कोड, ठीक है, कूल, ओके। अब यहाँ पे ओपन करो अपना गिट बैश, ठीक है, गिट बैश हो गया। यस नाउ, जिनका नहीं हो रहा था, आर यू एबल टू रीच, अब मेरे को कंफर्म करो यहाँ तक पहुंच गए, यस नो। एक फोल्डर बनाया, यस, एवरीवन, एवरीवन, ओके। बाद में मत बोलना नहीं हुआ, सनी हुआ, अखिलेश, सुनील, जनार्दन, यस हमें चेंज करना मैंडेटरी है। अनुराग, कोई की जरूरत नहीं है, नो की, कोई की जरूरत नहीं है, ओके
cool. Okay, now I came here. That मैं यहाँ file पे आ गया. जो बनाएंगे हम, that file is सही है, not सही है. work थोड़ा सा रुक बनाएगा. जाओ ना. अहमद भाई रुक जाओ ना थोड़ा सा. ओके. Okay. प्रमोद बोल रहा है सर कमांड शो नहीं हो रहे. कोई बात नहीं. ओके. प्रमोद होंगे यार, रेपो बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक कमांड शो होंगे. तुम है ना ओवर थिंक कर रहे हो, मालूम है, तुम रीडमी फाइल बना रहे हो इसलिए हो रहा है. डोंट मेक द रीडमी फाइल. ओके. कुछ चलो इस क्लास के बाद करके देखना. ओके, नो वरीज. ओके, आई एम कमिंग हियर. अब मेरे पास ये कमांड आए हैं. आई गेट दिस कमांड. ओके, मैं यहाँ पे this information will be added into the readme file. Okay, so I'm pasting this command. Okay, तो ये information will be added into the readme file. Sir folder के अंदर readme file बनी. Yes, readme file has been created here. Perfect, बहुत अच्छी बात है. Okay, उसके बाद what is the second command? Second command git init empty git folder will be created. The memory of the git will be created. हो गई? Yes, no? Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. हो गया, बहुत बढ़िया. ओके, गिट ऐड, मैं गिट ऐड स्टार कर दूंगा. ओके, आई विल मेक द गिट ऐड स्टार because I have a multiple files. It will take all the files. Okay, git add all the files has been added. Okay, now if you want to check the status, check कर सकते हो git status से. नहीं करना कोई बात नहीं. Okay, but I will follow the best practice. Git status. Okay, and yes, it is coming in green color. Okay, means status is green. Okay, now I'm doing my first commit. Okay, मैं यहाँ पे first commit कर रहा हूँ. Okay, I'm doing my first commit. Okay, मेरा commit हो गया. Cool. Now I'm changing the branch. Okay, from master, अभी मैं master पे था, main पे करना है. Jonathan is asking कि सर ये करना जरूरी है. Guys, see, if the code is here in master, if you try to push it, it will go to master. Master will not be available, तो वो fail हो जाएगा. Understood? It will get failed. So yes, it should be same. Okay, that's why we are doing these changes. Jonathan, समझ में आया? Understood? Okay, good. Thank you. Now I'm changing the branch to the main branch. See, after running this command, master branch has been changed to the main branch. विनय बंदा पूछ रहा है मास्टर ब्रांच और मेन ब्रांच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, 1 मिनट बाद ये क्वेश्चन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, ये ऑलरेडी मेरी स्लाइड में है, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको. ठीक है, गुड. आई चेंज टू द मेन ब्रांच. ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आई एम जस्ट एडिंग द लोकेशन कि कहाँ जाना है कोड, वेयर द कोड हैज टू बी गो. ओके, code has to be going to this location and I'm running the git push command. Code will be pushed into the centralized location. Now share your repos again, guys. मेरा तो हो गया. I am able to done again. Okay, it was like this. ये second repo थी. Yes, I am just duplicating it and you will able to see my code has been pushed into this place txt file. Share your repos. विकास सुन की repo आई है, कृष्णा की आई है. Okay, रविंद्र की आई है. What about others? Okay, Sanjay, I'm opening some repos. Good man, welcome to Java. एक बंदे ने welcome file बनाई. ठीक है, welcome code आ गया, बहुत बढ़िया. ओके, दो एक अच्छा, वेरी गुड मैन. कौन है बंदा? रविंद्र. रविंद्र भाई वेरी गुड. गाइस चलो, अंडरस्टूड. रविंद्र ने क्या किया? व्हाट ही डिड? रविंद्र, Sir, he compiled the code, sir. क्या बात है. रविंद्र, व्हाट यू डिड? Artifact. Just compiled the code and then committed it into the. पहले तुमने जावा का कोड बनाया, उसको कंपाइल भी कर दिया. कंपाइल करा तो क्लास फाइल बन गई. करेक्ट? Right. यस, नो? क्या फायदा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लास फाइल? गाइस हम जावा पढ़ने लग गए हैं. यस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग द क्लास फाइल? सर इसे कंपाइल कैसे करते हैं? कंपाइल करना सिखाऊंगा ना, तो सिखाऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो. ओके. रविंद्र एक स्टेप आगे, कोई बात नहीं. रविंद्र बताओ, तुम ही बताओ. सर कंपाइल किया ताकि एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सके. करेक्ट, वेरी गुड. यस, वेरी गुड. यस, हमने ही हैज रिटन, जो ये इंग्लिश लैंग्वेज का कोड था, इट हैज कन्वर्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोड इनटू द बाइनरी कोड. नहीं दिख रहा हुआ, ठीक है, दिखेगा, इट विल बी विजिबल, बट कोई सेंस का नहीं होता है. इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड दिस इज ए बाइनरी कोड कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज. ओके, गुड. ओके, और उसके बाद अब यू कैन रन इट एंड इट विल गिव द आउटपुट. खाई पहले का खाई. Cool, thank you. चलो, nice. गुड.
माय गॉड, सो मेनी पीपल के रेपोज आ गए हैं। गाइस सेंड इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो, सेंड इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप योर रेपोज, सब लोग प्लीज। share your repos into the WhatsApp group. परफेक्ट, आ रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल तो हो रहे हैं, गुड। ओके, प्रैक्टिकल्स आर हैपनिंग, गुड। क्या बात है, ऋषिकेश, प्रियंका, गुड। डेमो 1 चेक करते हैं। ओके, गुड हो गया, गुड, ठीक है, चलेगा, गुड, ठीक है, गुड। हर्षल ने कोड भेज दिया, बहुत बढ़िया, गुड, गुड। इस हो रहा है। ओके, अब whoever is not able to do it guys, ओके, एक बार फिर से करके देखना, इट विल डेफिनेटली, ओके। नहीं तो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन मैं करवा दूंगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं फिर से दोबारा फिट करा। ओके, हुआ तो है दोस्त, हुआ तो है। रोहित का भी हो गया है, ओके, सारे स्टूडेंट्स के हो गए, गुड, ठीक है। गाइस अब कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम कोड पुश किया है? हाउ मेनी पीपल वेरी फर्स्ट टाइम? सर जिंदगी में पहली बार कोड पुश हुआ है। माय गॉड, शोएब, रोहित, हर्षल, अयूब, कृष्णा, सब फर्स्ट टाइम वाले हैं, बहुत सारे। ओके, कूल। एक बंदा अभी भी पूछ रहा है बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, मेन में या मास्टर में? ओके, आंसर इज मेन, अभी मेन में होता है। ओके, कूल। ओके, मैं इसको समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन यू दिस। ओके, कूल, थैंक यू। चलो, नाउ आई एम कमिंग हियर, हमने कोड पुश कर दिया। ओके, नाउ वी अंडरस्टूड सम टर्मिनोलॉजी ऑफ गिट। ओके, कमिट क्या होता है? इट विल मूव द कोड from workstation to the staging area, that is called commit. What do you mean by push? The code which is available in staging area will go to the remote location, that you mean by push. Okay, अब पुल और अपडेट मैं आगे लेता हूं इन द अपकमिंग थोड़ी देर सेशन में। इफ यू वांट टू पुल द कंप्लीट कोड, git clone कमांड करके यू कैन पुल द कंप्लीट कोड इनटू योर लोकल मशीन एज। दैट्स इट, थैंक यू। नाउ नाउ ओके, हमारा अब तो सेटअप है, एवरीथिंग वी हैव, ओके, दैट्स गुड। ओके, कूल। नाउ आई एम गोइंग हियर। नाउ अब हमें समझना है ब्रांच। ओके, नाउ द कोड हैज बीन पुश इनटू आवर रेपो, कोड रेपो पे गया है। ओके, कोड हैज बीन पुश इनटू द रेपो, चलो चेक करते हैं। कोड हैज बीन पुश इनटू द रेपो, yes, code has been came into the repo, this is called repo। okay, now सबसे पहले this is public, so it is visible to everyone। guys, I am giving my repo link, ये मेरा लिंक है, repo link, can you check it, can you check it? अच्छा चलो, दो लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है, शशांक और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या प्रॉब्लम आ रही है, शशांक क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलोगे? शशिकांत, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अनम्यूट करके बोलो। नहीं सर, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बस एक अब बोल रहे क्वेश्चन हो ना पूछा था। कि मेरा भी क्रिएट नहीं हुआ, यही तो बोल रहे हो। नहीं नहीं, वो कोई दूसरा सर सिद्धार्थ बोल रहा था। गिट फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ सर। करेक्ट, ओके। व्हाई इट्स नॉट क्रिएटेड? वो डेफिनेटली क्रिएट हुआ है, पर तुम्हारे लैपटॉप की सेटिंग में हिडन फाइल को हाइड कर रखा है तुमने। ओके, सो इट इज नॉट विजिबल टू यू, अंडरस्टूड? ओके सर, मेक इट ओके, ऑन इट। तो अपने लैपटॉप की सेटिंग में हिडन को अलाउ करोगे ना, तो इट विल बी विजिबल टू यू। ओके, श्योर सर। रूबी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्या होता है, प्रॉब्लम के पीछे 10 बच्चे पहुंच गए, सर मेरी प्रॉब्लम है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग की सेटिंग अलग है। सर ओके, दैट्स सर एक फाइल चला गया रीडमी डॉट एम डी, बट जावा वाला फाइल नहीं गया। हाँ करेक्ट, क्योंकि तुमने मालूम है क्या किया था गाइस? चलो, व्हाट ही डिड द मिस्टेक, बताओ। अविनाश ने क्या किया है? अविनाश ने मुझे नहीं सुना, आई एम श्योर। अविनाश मेरी बात नहीं सुन रहा था। बोलो, अविनाश की क्या प्रॉब्लम है? Execute this command ही नॉट एग्जीक्यूटेड instead दिस एग्जीक्यूट। कमांड, He instead had of star। तुमने ये वाला on, एग्जीक्यूट करा है। only read me। हाँ, तुमने रीड भी करा है, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया था, याद है? तुम्हें स्टार लगाना था, देन ऑल फाइल विल बी गॉन। गाइस समझ के करना होगा, अंडरस्टूड? ओके ओके। ओके, इसलिए तुमसे प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, ओके, ताकि यू विल डू द मिस्टेक, और जब मिस्टेक होगी ना तो यू विल मेक इट फिक्स करोगे। ओके, गुड, थैंक यू। चलो, नाइस नाइस। नाउ गाइस, at this point, this is my repo, you can see my repo is visible, right, everyone, because this is public repo। okay, how to make it private? In the real time also it will be public? No, in the real time it will be private। कैसे होगी? don't make it private, मेरा देख लो। okay, I am going to the setting, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे एक मिलेगा। okay, change the visibility of repo to private। okay, it is telling, do you want to make it private? I'm telling yes, I want to make it private। okay, make this repo private। id password पूछेगा। okay, it is asking the password, मैं password दे रहा हूँ,
and now my repo is private. Okay, guys, as soon as my repo become private, भाई मुझे तो दिख रही है. What about you guys? You are able to see my repo जो मैंने लिंक भेजा है चैट में. Oh, sir. 404. 404. What do you mean by 404? Is this an issue? ये एक issue है क्या सिद्धार्थ? Is this an issue? No, No. sir. It's an error. Like, It's It's access not an error related. also. It's not It's Access accessible. issue. It's not So not accessible. accessible. access issue. चलो अपन कह देंगे access issue है. ठीक है? Okay. What is Authentication the issue. solution for this? What is the solution for this? Siddharth, give me your email ID. अपनी email ID दो. Rohit, give me your email ID. अपनी email ID दो. Okay. Now, guys, see. Let assume this is a private repo. It is available for me. Okay. Now, what I'm doing it, I want to provide. Rohit or Siddharth has given the email ID to me. So I'm copying his email ID. अब मुझे email ID को कहीं पे ऐड करना होगा. I have to add this email ID somewhere so that they will able to see or work as a team. Correct? Privately. In your company also, it will follow the same thing. कोई आंसर देगा where I have to add this email IDs? कहाँ पे ऐड करनी होगी? In contributor, sir. In contributors. कहाँ है भाई वो ऑप्शन contributors का और We have to collaborator go का? to settings. Cool, very good. सेटिंग्स में आ गए. सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन है कोलैबोरेटर्स. ओके, कोलैबोरेटर्स में गए. यहाँ पे इनवाइट किसी को नहीं कर रखा है. ऐड पीपल डाल दी मैंने दो चार लोगों की. रोहित भाई की ईमेल आईडी डाल दी. सन्नी की ईमेल आईडी है, सन्नी की डाल दी. ओके, और भी करना है ना, मतलब और ऐड करना है. चल ऐड रोहित. ओके, फिर यहाँ पे ऐड पीपल पे गए. सन्नी की डाली. ओके, सन्नी और एक आध और डाल देते हैं. सिद्धार्थ की भी डाल देते हैं. एक एक ही लेना है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए. सन्नी, ऐड पीपल, सिद्धार्थ. मैंने तीन लोगों की ईमेल आईडी ऐड कर दी. ओके, एंड आई होप यू गेट ए इनविटेशन आल्सो. इफ यू विल एक्सेप्ट दैट इनविटेशन, व्हाट विल हैपन? यू विल जॉइन माय और यू विल एबल टू सी इट. अंडरस्टूड? यस, नो? सर डेवऑप्स इंजीनियर का क्या रोल है? भाई ये डेवऑप्स इंजीनियर को ये भी करना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू मेक योर रेपो प्राइवेट. ओके, एंड देन यू हैव टू गिव द एक्सेस टू द डेवलपर्स. If you created a private repo, you will provide the access to the developers. Understood? समझ में आया? Okay, cool. Thank you. First step is done. Okay, देखो रोहित ने तो एक्सेप्ट कर ली है. ओके, इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी है अभी तक. ओके, रोहित ने एक्सेप्ट कर ली तो रोहित इज एबल टू सी. सिद्धार्थ इज नॉट येट एक्सेप्टेड. सिद्धार्थ भाई अपना मेल ओपन करो, एक्सेप्ट करो, देन यू विल आल्सो एबल टू सी द रेपो. डन. expected, sir. हाँ ठीक है ना. ना अब मेरा क्वेश्चन ये आएगा. Now I am coming here. Okay. Now I am coming here. थोड़ा सा मिनट. Guys, please be on mute यार. अपने आप को आदत रखो ना. Please be on mute. Mute पर रखने की हैबिट रखो. Okay. Because disturbance is coming. Okay. Now I am coming here. Okay. मैं public repo में जाता हूँ. I am going into the public repo. Okay. I am going into the public repo. Public repo. Repos. My first repo. This is my repo. Okay, where I'm doing some experiments. Okay, this is main branch. Okay, interview question. Very simple interview question. What is branch? Where the code is getting maintained. Where the code is getting maintained. That is called branch. Okay, code जहाँ पे save होता है branch में होता है. Okay, now how to create a branch? Is this a tough question? How many people knows how to create a branch? कितने लोगों को पता है? How many people knows? सनी को पता है, रनंजय को पता है, तनु को पता है. ओके, अनुराग को पता है. गुड. ओके, सी आई कैन सी 5 पीपल को पता है बस. व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं पता. तो यू आर कमिंग हियर फॉर लर्निंग पर्पस. आई एम क्लिकिंग ऑन हियर एंड आई एम क्रिएटिंग ए ब्रांच. मैं एक नाम ले लेता हूँ अनुज. ओके, ANUJ अनुज. ब्रांच BRANCH. ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस. मैंने क्या करा? आई वेंट इनटू द मेन. अभी नाउ माय ऑल कोड इज अवेलेबल इनटू द मेन ब्रांच. अभी मेरा सारा कोड इज अवेलेबल इनटू द मेन ब्रांच. नाउ आई एम क्लिकिंग दिस and I given a name Anuj branch and I click on create branch. As soon as I click on create branch, what will happen? The code of main branch, copy the complete code of main branch will be into the Anuj branch. Anuj branch में सब code आ गया है. Okay, this is branch Anuj. Okay, this is a different link. Okay, now okay, this is a different link. Yes, and here main branch is a different link. दोनों अलग अलग हैं.
both are separate out, both are different. Agree? Yes, no? Can anyone tell me? Because why you created another branch? Interview question. Why we have to create another branch? क्यों बनाई? Raise your hand and give me the answer. To retrieve the data if something goes wrong for the different branches. Absolutely wrong answer है you. Okay? बिल्कुल गलत आंसर है. Avoid conflicts. Wrong answer. Praveen Chite, give me the answer. Yes, sir. Just because of the developer. Anuj is developer and he is changing the version of that file due to this. अच्छा सिचुएशन बना आंसर दो या थोड़ा सा एक्सप्लेन करो प्रॉपर्ली. Okay, once Interview. main Praveen, branch simple. we can't change Praveen, guys, listen. You want to crack the interview? करना Yes. इंटरव्यू क्रैक करना है कि सिर्फ ऐसे ही घूम के आना है? नहीं करके आना है. क्रैक करना है ना? तो मैं जब तुम्हें जबरदस्ती फोर्स कर रहा हूँ सही आंसर देने के लिए, तब भी कुछ स्टूडेंट गलत ही आंसर दे रहे हैं. देखो जिनको नहीं आता वो तो लिसन कर रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं, और जिनको आता है वो हाफ आता है, वो हाफ आधा गलत आंसर दे रहे हैं. ओके कूल, चलो नो वरीज. ओके रविंदर, गिव मी द आंसर. व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट ब्रांच? क्यों अलग अलग ब्रांच बनाई जा रही है? यस, म्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ रविंदर. Yeah. So different branch will have different type of code. Let's say I have committed some code and that is showing only the date. As you given the example yesterday, date with AM PM. Now the ओके चलो मैं देता हूँ रविंद्र. योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर. गाइस यस्टरडे वी डेवलप द क्लॉक. ओके हमने एक क्लॉक बनाई थी 8 पीएम की, 8 एम की. ओके नाउ दिस इज ए क्लॉक, और मैंने रविंद्र डेवलपर को हायर किया है. ओके करंट इन दिस ब्रांच और इन दिस प्लेस द 8 एम का ये क्लॉक का कोड है. ओके नाउ यू वांट टू चेंज समथिंग. ओके या हेलो वर्ल्ड, चलो फिर मैं लेता हूँ. ओके आई विल टेक द जो अभी है रियल में वही ले लेते हैं. आई एम कमिंग द रियल वर्ल्ड. आई एम कमिंग हियर एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का कोड है, और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द डे 2 सेशन. ओके इसके अंदर मुझे अलग कोड और एक और ऐड करना है. ओके आई हैव टू ऐड सम मोर कोड हियर. ओके तो एट दिस पॉइंट यू कैन सी हियर Anuj मेरा डेवलपर है, रविंद्र इज माय डेवलपर. ही क्रिएटेड हिज सेपरेट ब्रांच. नाउ ही विल डू द चेंजेस इनटू हिज ब्रांच ओनली. ओके अभी एक लाइन थी, नाउ ही विल ऐड वन मोर लाइन. ओके एक और लाइन ही विल ऐड. यहाँ पे मैंने एडिट करी. ओके आई एम एडिटिंग इट, और यहाँ पे मैंने एक और लाइन एडिट कर दिया. ओके डे 2 की जगह ही एडिट द डे 3. ओके नाउ ही डिड द चेंजेस इनटू द कोड. मींस विद दिस इमेज, इफ यू विल सी in this image, earlier I was here, earlier we all are here. Okay we all are here into the main branch. Okay रविंद्र ने क्या करा, he created his another branch अनुज के नाम से. Okay as a new feature, और he added some more new code here. ये अपने नए कोड यहाँ पे ऐड करता रहेगा. करेक्ट? यस नो? ओके अनदर डेवलपर प्रवीण को भी कुछ करना है, तो he also created his branch and he will write his code into his branch. ओके नाउ आफ्टर दैट इफ द कोड इज गुड, ये कोड को मर्ज कर देंगे मेन ब्रांच में. करेक्ट? यस नो? एग्री? यही प्रोसेस होगी, राइट? अब मैं इसको आई विल एक्सप्लेन इन ए बेटर वे और डिफरेंट वे प्रैक्टिकली. ओके नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, आई हैव ए कोड. Okay, I have a change into my file, and I save this. I commit. Okay, Copilot is thinking, guys, see here, Copilot is working with us. Okay, I'm canceling again. Okay, I'm committing. I'm trying to commit. पहले मैंने सब कुछ मैनुअल किया था. In this location, I manually did with the help of this thing. ये वाला कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ with the help of UI. Now I'm doing this thing with the help of UI. मैंने यहाँ पे कमिट करा. You can see Copilot will be with us, or he will do some writing of the text, formatting and all this thing he will do. देखना committing changes. ये देखो Copilot is thinking, उसने खुद लिख दिया कि welcome message day 3 has been added into the commit. Understood? समझ में आया? दिखा? ओके तो Copilot has been activated, वो अपनी हेल्प कर रहा है. ओके एंड नाउ आई एम कमिटिंग. ये पूछ रहा है कहाँ पे, वेर यू वांट टू कमिट. आई वांट टू कमिट इनटू अनुज ब्रांच. कमिट चेंजेस, एंड एज सून एज आई क्लिक दिस, द कोड हैज बीन चेंज्ड इनटू दिस प्लेस. नाउ गाइस अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके आई केम हियर. ओके दिस इज मेन ब्रांच. मेन ब्रांच में लिखा है ओके ओनली डे 2, और यहाँ पे अनुज की ब्रांच में लिखा है डे 3. करेक्ट? यस नो?
Okay, ideally the code has to be maintained from the main branch. Ideally the code has to be maintained into the main branch. But here the code is ahead. मतलब if you will see this image, बहुत basic समझा रहा हूँ guys, बहुत basics. Okay, main is here and he went ahead. ये आगे निकल गया. Okay, now what is the next step? कैसे इसको यहाँ पे इधर merge करना है? What is the best practice, guys? I need a best practice interview answer. How this code has to be merged into the main branch, guys? जिसको आता है वही दो, जिसको नहीं आता रेज योर हैंड डाउन प्लीज, अपने हाथ नीचे कर लो. ओके, गलत आंसर देके कोई फायदा नहीं है. ओके गाइस, रेज योर हैंड हु नोज द आंसर, जिसको सच में आंसर आता है. रेज योर हैंड. रूबी, आप योर आंसर इज करेक्ट. कैन यू एक्सप्लेन टू एवरीवन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? Sir, whenever we are making any changes in the different branch, we are raising a peer or merge request to the main branch, and whoever is reviewer who review our code, and if it is okay, they will merge into the main. What she told, okay guys, रूबी ने मजाक मजाक में बहुत सारी बात बोल दी है. ठीक है, she told कि the code will be your work, okay, will be merged into the main branch. Okay, कैसे, how it will happen? Okay, to doing this activity we have to understand this all process. ये पूरी process पढ़नी पड़ेगी. Okay, what exactly it is? Ruby as a developer, Ruby has created a new branch. Up technical terms you have to use. New branch means we in technical terms developer will call it a feature branch. Okay, you have created a feature branch. After creating a feature branch, you made the commit. Okay, you made the commit. Okay, after making the commit, when your commit is done, okay, when your changes are done, then you will raise a PR, pull request. Okay, you will raise a PR, pull request. Okay, sir, how to raise a PR? Okay, interview question. If you will come up here, by default automatically यहाँ पे एक option आने लग गया, ये देखो, compare and pull request. Okay, automatically this option is coming. Okay, as soon as you will click on this compare and pull request, कुछ बोलेंगे नहीं आया तो you have not committed the code, that's why it is not coming. As soon as you will commit, this PR will come. Okay, now automatically this message has been added. Okay, with the help of Copilot. Copilot is inbuilt working with us. Okay, this message has been added. Okay, now I will tell review my code. Okay, I am raising PR. Okay, मैंने PR raise करी है. Review my code. Okay, यहाँ पे you have to add the reviewer name. यहाँ पे reviewer का नाम डालना पड़ेगा. Copilot को भी कह सकते हो. You can tell to the Copilot also, Copilot review my code. Otherwise, whoever is your team member, collaborator or XYZ, you have to add that person. Okay, and then he will make that review. Okay, you can directly assign to someone. Okay, जो भी whoever is your teammates are available, you can assign to your teammates or manager or lead as well. Getting my point? Understood? अहमद को समझ में आ रहा है. What about others? ऋषिकेश को आ रहा है. अयूब, संदीप, प्रभान, मोहसिन, वेरी गुड. क्या बात है, सबको आ रहा है. घनश्याम, अनुज. What about others? What about others? धनंजय, खालिद. ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया. ओके, नाउ यू विल असाइन द रिव्यूअर. ओके, यहाँ पे मैसेज लिखा. ओके, एंड देन आई एम कमिंग टू दिस इमेज. हियर यू आर रेजिंग द पीआर. ओके, मैंने यहाँ पे पीआर रेज कर दी. आई एम रेजिंग द पीआर. मैंने यहाँ पे पीआर रेज कर दी. ओके, क्रिएट ए पीआर. आई रेज द पीआर. पीआर हो गई. ओके, द पीआर इज शोइंग. ये पुल वन इज ए पीआर. पुल वन इज ए पीआर. एट दिस पॉइंट इट इज टेलिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर. ओके, देयर इज नो इशू. Now your manager will review the code. Your manager will review the code. He will say, you manager आप कुछ तो बोलेगा, right? All good, or no, this is not good. He will make some comments. Okay? यहाँ पे तुम्हारा manager के साथ discussion, client के साथ review. If the review is completed, सब कुछ ठीक होगा. Okay? If all the things are good. Okay? After making all this commit, ये सब commit वगैरह सब कुछ confirm discussion होने के बाद, then your manager will say, okay, now code is fine, and now he will click on the merge pull request. He will merge the thing. Okay, as soon as you will merge, क्या होगा? कोई आंसर देगा? What will happen? It will merge the code into the main branch. Good. Main Chaitanya, branch go code ahead, will be answer. updated. Chaitanya, Sandeep, हाँ बोलो. All main the branch branches code will be updated.
यार बिना हाथ ऊपर करे, बिना कैमरे पे आके क्यों बोलते हो? वन बाय वन रेज योर हैंड, कम अप ऑन द कैमरा एंड गिव द आंसर. हाँ संदीप बोलो. Sir, main branch code will be updated after merging the. Correct. This code from Anuj branch will be go to the main branch. चलो एक बार चेक कर लेते हैं. Okay. I am coming here. Okay. I am coming here. मेन ब्रांच में अभी दो लाइन है. मेन ब्रांच में ओनली वन लाइन है, ये वाली Day-2 है. ओके. नाउ आई एम मर्जिंग दिस. ओके, मैं मर्ज कर रहा हूँ. आई एम मर्जिंग दिस. ओके. एंड एज सुन एज आई विल क्लिक ऑन मर्ज, हाँ ऑल कोड इज गुड, सब कुछ ठीक है. आई क्लिक ऑन मर्ज कॉन्फ्लिग मर्ज. ओके. एज सुन एज आई क्लिक ऑन मर्ज, यहाँ पे कोड मर्ज हो गया. फ्रॉम ग्रीन कलर द ब्लू कलर लाइन मर्ज लिखा हुआ आ रहा है. इट इज शोइंग मर्ज. एज सुन एज इट विल बी मर्ज at this point, यहाँ पे अभी दो सिंगल लाइन थी in the main branch, single line in the main branch. I am duplicating it. Okay. Now third वाला भी आ गया है into the main branch. Code came. Understood? अनुज का, तनुज का या एक्सवाइजेड किसी का कोड मेन ब्रांच में आ गया है. हाउ इट केम? विद द हेल्प ऑफ रूबी और विद द हेल्प ऑफ पीआर रिक्वेस्ट. रूबी अब एक बार फिर से एक्सप्लेन करो. आर यू यूजिंग इन योर कंपनी? ऐसे ही होता है क्या? How many people are using this process in the company? कितने लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं? Atul is Yeah, telling yes. same Pranay, Sandeep. process हाँ. we are using in our company. So whenever Ruby. we are we are creating any new branch for a development, any new specific development, we are creating a new branch and we are doing a development, then we are raising a PR for a merge. Correct. And developer will, your manager will review or your client will review. If all good, then he will click on the merge and the code will be merged into the master branch. Yes. Perfect. Okay. Cool. Thank you. हाँ जनार्दन, you are trying to say something? कुछ बोलना चाहते हो? So can we demo a scenario wherein the change is done in this example, Anuj's local repo, and that has been pushed. Can we demo that scenario? जनार्दन, what you are trying to say? क्या बोल रहे हो? सीधे सीधे बोलो, straight forward. मैंने अभी चेंजेस हमने डायरेक्ट उसके रेपो में किया, राइट? रेपो में वो किया अनुज के सेकेंडरी ब्रांच पे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो वहां पे नहीं करके उसके लोकल रेपो में करके वो पुश करते तो हाँ करेक्ट, बिल्कुल. obviously you can do the changes. Another developer will do the changes into the local और वो फिर से पुश करेगा in his branch. main की जगह, in place of main, फुल की he जगह will पे push पुश into, होगा ना वहां पे, push फुल into की his branch. Okay. यहाँ पे आएगा अनुज branch. Okay. He will push to the Anuj branch. Okay. सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पे अनुज branch पे पुश होगा. Code will be pushed to the Anuj branch. Sir, Okay. उसके screen share बाद नहीं है. PR will be PR from UI. PR UI से रेस कर देगा. Right? Sir, your screen is not अरे shared. समझ में. वेट वेट वेट, अयुब Yeah. अयुब अयुब. जनार्दन, ओके क्लियर? हाँ ठीक है. तो वहां पे मतलब वो फुल जो वापस मतलब पुश किया उसने चेंजेस अपने ब्रांच पे, तो वापस हम लोग पुल रिक्वेस्ट वापस करेंगे क्या? Obviously, बिल्कुल. See, PR is for adding the code, add code in main branch. उसके लिए करोगे तुम PR. मेरी वो जो एक स्टेप था ना जिसमें कंपेयर एंड पुश करके था ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज द कोड विल बी ऑलरेडी बी पुश देयर, राइट? ऐसा नहीं जनार्दन. सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. सी यू विल पुश द कोड इनटू योर ब्रांच. ओके, तुम अपनी ब्रांच में पुश करोगे. उसके बाद इफ द कोड केम इनटू द ब्रांच देन पीआर रेस करोगे. गाइस आर यू, कौन कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं? हाउ मेनी पीपल आर एग्री विद मी? कितने लोग ऐसे ही करते हैं कंपनी में? हर्षल करता है. व्हाट अबाउट अदर्स? रूबी, मैं सही बता रहा हूँ? रूबी आंसर. Yes, sir. This is the same process which we are following. Like we ऐसा are जनार्दन सी मत, डोंट पुट योर ब्रेन. सिंपल सी बात है. यू आर पुशिंग द कोड इन योर ब्रांच. ठीक है, गुड. ओके, लोकल से कर दिया, गुड. ठीक है. एंड देन यू हैव टू रेज ए पीआर. तुम्हें पीआर यूआई से रेज करोगे, देन ओनली द कोड विल कम इनटू द मेन ब्रांच. अगर अप्रूव होगा देन ओनली इट विल कम. दैट्स इट. ओके. नाउ आई एम कमिंग हियर. गाइस अभी हमने देखा दिस रिक्वेस्ट. ओके. अब यार इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पीआर? या नहीं करेंगे? चलो जनार्दन बोल. सिंपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जनार्दन वो डोंट वांट टू डू दिस प्रोसेस. क्या होगा इससे बताओ? हाँ बोलो यार, बोलो गाइस, सोचो. Conflicts थिंक. will come, sir, Yeah, if we it don't follow will this process.
What will happen? Conflicts will come if 2-3 Conflict will come. developers are. See, तुम लोग see, you are raising the hand. मैं एक को आंसर दे रहा हूँ, उसका आंसर कंप्लीट कर रहा हूँ, and then I am taking the another person answer. Correct? Yes, no? Yes. Right? तो same thing happen. अगर सब लोग, if everyone will say in a same shot, सब एक साथ बोलने लगोगे तो it will be merge conflict. Correct? Yes, no? Yes. I am not able to give anyone's answer. मैं किसी का आंसर नहीं दे पाऊंगा. Right? Agree? Yes, no? So if one by one you will raise the PR, one by one your code will be reviewed, one by one your discussion will happen, and then it will be pushed into the, or it will be merged into the master branch. Merge conflict नहीं होगा, code को conflicts नहीं होंगे. That's it. This is the use case why we have to use the PR. You have to say as a best practice in your company, you guys are following the PR request, merge request. Okay? Cool. Thank you. Yeah. Now I'm sharing my screen again. Okay, this is how the PR in the visualization it will look like. Okay, I'm repeating again. Code is there into the main branch. Okay, feature branch will be get created. The code changes will happen into the feature branch, means multiple commits will happen. As soon as multiple commits will happen, after the finalizing of the commit, developer has to raise a PR. Okay, PR, it will happen the discussions with the manager, team, client, XYZ, teammates, team lead, XYZ. The discussion will happen. If the reviewer will say all good, okay, then he will click on the merge request, and your code will also come into the main branch or master branch or main branch. Understood? Yes, no? Guys, type you into the chat box. समझ में आ रहा है? और confirm me with this. आ रहा है, पूजा को आ रहा है, प्रशांत को आ रहा है, हेमंत को आ रहा है, संदीप को आ रहा है. परफेक्ट, थैंक यू. ओके, नाउ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन सर, मेन ब्रांच और मास्टर ब्रांच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अभी तक नहीं सॉल्व हुआ. जनार्दन ने पूछा, 2-3 लोगों ने पूछा. ओके, चलो, एनीवन नोज द आंसर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन ब्रांच और मास्टर ब्रांच? रियल आंसर, जेन्युइन आंसर, नो दुक्का, नो थिंग. आई नीड अ जेन्युइन आंसर. जनार्दन, पता है आंसर? Oh, sir. Because it was just a nomenclature change where Microsoft took over Git. Guys, चलो, anyone else कोई और सिंपल लैंग्वेज में बोलेगा? In the simple language, what is the reason? Main branch, when we clone the all our file in our local machine, we can use as a main branch. Sorry, master branch. नहीं, wrong answer, wrong answer, wrong answer. Jonathan, you can explain in simple way now, please. Karthik answer is correct. Karthik is giving the correct answer. Jonathan, explain in a simple language. I mean, the name has been, I mean, Microsoft, since the time when Microsoft took over GitHub, they have changed it. Changed the name. Guys, technically, no changes or no difference into the main branch or master branch. Technically, no. Okay. When the Microsoft purchase the GitHub, okay, GitHub को जब उसने परचेस किया, then he decided, भाई मैं नेम चेंज करूंगा मास्टर का टू द मेन ब्रांच. अंडरस्टूड? सिर्फ नाम चेंज हुआ है. Okay, that's it. There is no technical or functional changes. Only that technically the name has been changed and changed to the master branch, main branch. Okay. If your project is 3 year old, अगर तुम्हारा project 3 साल पुराना है, okay, 3 year old, then definitely you are dealing with master branch. If your project is new, okay, अगर तुम्हारा project new है, then you are in your company you are using as a main branch. Chaitanya came into the picture. Chaitanya will say some points. Go ahead. Chaitanya, इसके आगे बोलना है, ठीक है? Don't repeat the same thing. Yes. अरे वो आपने बोलने से पहले हैंड रेज किया था, बट या ओल्ड रेपोज वी स्टिल हैव मास्टर, सो इसीलिए वी कैन सी All मास्टर. 3-year-old guys in your company, if the 3-year-old repos are there, they are still on master, but new repos, every new project is into the main branch. कुछ नहीं हुआ, Microsoft purchased it, so he changed the name. That's it. Cool. Okay. Prasad is giving some chat GPT answer. मैं उसको भी समझा देता हूँ. Okay. Let's see. Okay. Chat GPT का आंसर ये विनय ने पूछा था, मेन और मास्टर. Main branch, the current. Because sir, Vinay, mute. Okay. The current standard default branch in a Git is a main branch. Yes, correct. Okay. हम लोग उसे production ready branch कहते हैं. That is also correct. Okay. Yes, master branch is a old default branch before Microsoft purchases. इतना सही लिखा है ChatGPT में भी. Understood? Yes, no?
Yes, yes, no, understood, Sir, understood. but why we are changing from master branch to main branch today? No need of, right? हाँ चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. ओके गाइस, ही इज आस्किंग आज क्यों चेंज कर रहे हैं, बोलो. व्हाई वी आर डूइंग इट टुडे. गाइस एनीवन, चैतन्य गो इट, बोलो. हाँ, so To match it in the existing. in the existing one, I mean, we have changed it. I mean, the older repos, it is सी using चैतन्य master. स्ट्रेट फॉरवर्ड से ना, दिस चेंजेस हैपन इनटू द गिटहब. Match it गिटहब will में चेंज हुआ है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने Exactly. गिटहब परचेज किया है. ही हैज नॉट match. परचेज दिस गिट सॉफ्टवेयर. गिट सॉफ्टवेयर थोड़ी ना परचेज किया है. इट हैज बीन Git चेंज इनटू bash, द गिटहब. Git bash is still with the Git bash is Linux still store with with. Linux, and GitHub has been purchased by Microsoft. So that's why Git bash still uses master. So we have changed it from master to main, Correct. basically. अब हमें इंटीग्रेट करना है. ओके, वी वांट टू पुश आवर कोड टू द करेक्ट लोकेशन, तो वी हैव टू चेंज इट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट हैज नॉट परचेज द गिट बैश, तो गिट बैश इज स्टिल यूजिंग द मास्टर. ये मेरी मोनोपोली है, मैं अपना मास्टर ही चलाऊंगा. अंडरस्टूड. ओके, दिस व्हाट हैपेंड. ओके, कूल, थैंक यू. चलो, नाइस, गुड. ओके, नाउ गाइस आई वांट यू टू कीप ए स्मॉल ब्रेक. ओके, एक बार छोटा सा डाइजेशन लो. ओके, देन आई विल टीच यू सम मोर थिंग्स. इज दैट ओके? Yes, no? Otherwise, the concept will be merged. एक concept के अंदर दूसरा concept घुस जाएगा. Okay? So I am just giving a small break, 3-minute break. Okay? And just see this image. इसको देखने की कोशिश करो. Try to understand. Okay? Or try to remember this thing. Okay? Then I will teach you some more things. I am giving a small break. CLOCK clock for just 2 minutes 5 seconds. Okay? Read this into the 2 minutes, and then we will be back and we will perform our practical or understanding the some more concepts. Okay, please go for a small break. Guys, I'm back. I hope you have read it. What is clone? What is checkout? What is add, commit, and push? Are you aware about all these 5 concepts? पांचों concept के बारे में पता है? Yes, no? कितने लोगों को नहीं पता है? How many people are not aware? Just type no into the chat box. आयुब को नहीं पता, ठीक है. श्रीनिवास को भी नहीं पता, ठीक है. श्रीनिवास सामने दिख तो रहा है. Why you are telling no? रविंद्र भाई, तुम्हें तो पता होना चाहिए. सामने दिख तो रहा है. तो वैसे आई डोंट नो बट आई कैन रीड इट नाउ. आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, पहले पढ़ के बोलो ना, क्यों नो बोल रहे हो. ओके, रीड इट. रूबी इज अवेयर. ओके, चलो, रूबी को पता है. गाइस, एनीवन, आई नीड 5% टू हेल्प मी आउट फॉर दिस थिंग. एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा 30 सेकंड में. व्हाट इज गिट क्लोन? चैतन्य, We गो अहेड. copy या, the code from the remote repository. correct. Ayub, very good answer. If the code is available into the repo, okay, and you want to download into the local machine with the help of git clone command, we can download it. Yes. Perfect. Okay, good. What is git checkout?
we can check out the branch name, like what are the branch you are, like master or the main. So you can give the branch name as well over there. Correct. Okay, if currently we are into some branch, okay, and we want to change it the branch, okay, then technically we can do the git checkout command and we can change the branch. Another person, what is git add? हाँ रूबी या विनाश या यासीन कोई भी. In Git add, we are tracking the files from the local repository to The make staging it, area. yeah, Correct. staging area. With the Yes. help of add command, with the help of add command, the tracking will be add into the particular files, and technically it will go into the staging area. Commit के बाद officially जाता है, it will go after the commit, but you can say that it will be file will be tracked. Okay, file will be tracked. Cool. Commit नहीं चैतन्य, मैं लास्ट वाला दूंगा. I will give it to you last to you. Okay. Ruby, go ahead. What is commit? Yeah, commit is basically we are moving our file from staging area to the local repository. Hey, उल्टा हो गया है तो. You given the ulta reverse answer. No, Staging area to remote. staging area to local repository, right? Like when नहीं, we ये add गलत लिखा है. This is written wrong. आप पढ़ के मत बोलो, मैंने जानबूझ के गलत लिखा है. No, staging area to history, sir. No, नहीं. Staging local repo to stage area. staging area. Local repo to stage Local area. commit will happen. Commit number will be added and local to staging होगा. Staging Okay. area. Local to staging area. Okay, man, we made it intentionally wrong कि तुम देखो. See, Ruby was starting from Ruby ने आंसर दे रही थी Ruby. Okay, but now गलत देती है Ruby. See, sometime interviewer may confuse you also. तो be with your own or actual concepts. Okay, cool. Sure. Yeah, Chaitanya, go ahead. Last answer. Git push. Okay. So in push, what happens is whatever are the local commits, they would be moved to the remote repository. बढ़िया. ये भी मेरा इसके वो था. लोकल से मूव नहीं होता है. रॉन्ग आंसर. इनकम्प्लीट आंसर अगेन. लोकल से नहीं होता है. staging From area. staging area to remote. Staging to remote area होता है in the git push. Staging. सर ने थोड़ा सा घुमा दिया. Understood? Okay, got you. ये ट्रैप होता है. ओके, कि हम लोग में कुछ गलत लिखा है, मैंने बोला गलत लिखा, उसको रीड करके दिखाओ, तो तुम गलत रीड करो. नहीं, समझ के पढ़ना है. ओके. गिट पुश. गिट पुल. व्हाट इज गिट पुल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चैतन्य, गिट पुल क्या होता है? इंटरव्यू क्वेश्चन. गिट पुल. It will just simply pull the code that is present. Whatever are the latest changes in the laptop, they would be pulled basically. I will explain. Okay, नहीं, From local incomplete. to the repo, like central repo, you can pull the data, like code. चलो, I will. Okay, चलो. Guys, basic concept हम लोग समझते हैं. उसके बाद मुझे I want to teach you this advanced level thing. I think not today. कल हम लोग एडवांस पे जाएंगे. Okay, and but today I would like to discuss this part with you. Yeah, मैं आज तुमसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ. Okay, this is what happened. All these things into the actual real time with developers. हमारा DevOps का not much role, but for a developer, this all things may happen. Okay, workspace. Don't call as a folder. Interview में कभी folder work use मत करना. Use as a workspace. Understood? Yes, no? Okay, workspace. Okay, workspace and three things are there: staging, local, and remote. Remote is a repo. Okay, repository, GitHub. I'm talking about the GitHub. Okay, Ruby answer दे रही है. Ruby, go ahead. What is git add command? Git add means we are committing our changes to the staging area. Like Perfect. we are saving our MV मतलब move. Okay, वो भी similar होगा. और RM मतलब remove. Okay, if you want to remove something, RM command can be used. Okay, cool. Commit. What will happen with the commit? Yeah, Yasin, go ahead, one by one. From staging staging to commit area, local repo. Staging to commit area, you can say. Okay, or there is a local repository, हमें दिखती नहीं है, it will not be visible. Okay, वो जो .git folder होता है, there is a .git folder. In that, all these things are getting maintained. Okay, तो local repository also होती है git commit से local repository, but in the technical terms we will call as a कि staging area पर लाने के लिए
we will make as a commit, and the important point is commit number will be defined or commit number will be created. Understood? Sir, Type you into the chat box. You. सर जब हम गिट इनिट करते हैं तभी वो बनता है ना लोकल रिपोजिटरी. Git init करते हैं, yes, सबसे पहले git init होगा. Okay, then .git folder will be created. Okay, अब कुछ स्टूडेंट्स की कंसर्न आया था कि सर मेरा .git folder नहीं आया. In your laptop it is hidden. Okay, so you have to enable the hidden, then it will come. In Okay, cool. folders. Folder is hidden. Okay, cool. Now git commit -a, अगर मैं -a दे देता हूँ तो ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इट विल बी कमिटेड टू द staging area or local repository. Understood? Yes, no? ओके, हाइफन ए से ऑल हो जाएगा, ये ऐड हाइफन ए बिलोंग टू द ऐड और वो ऐड हो जाएगा. ओके, कूल. बाय मिस्टेक एंड यू डिड समथिंग, कुछ रीसेट करना है, रिमूव करना है, मूव करना है, देन यू कैन रन द रीसेट कमांड एज वेल, तो प्रीवियस स्टेप पे आ जाए. ओके, अगर पूरा रीसेट करना है, कमिट आईडी एक नंबर जनरेट हुआ था. ओके, आई एम गोइंग इनटू दिस नंबर, यहाँ पे कमिट करते हैं, एक नंबर आया था, गिट रीसेट, और मैं नंबर, इफ आई विल पुट दिस नंबर, then what will happen, staging area से it will be reset to the previous one. Understood? Guys, समझ में आ रहा है? Okay, if you will reset with the commit id, ये रहा commit id, the number is there. Okay, sir, is this commit id in UI also? हाँ दोस्त, ये UI पे भी होती है, I will show you. Okay, ये UI पे भी होता है. Okay, if you will go here, यहाँ पे एक commit id होगा, my repo. Okay, repo, okay, ये रहा. Okay, ये रहा. Okay, here is a number, ये commit id. It look very small, but इसको क्लिक करोगे तो वो बड़ा नंबर भी आ सकता है. कहाँ गया, ये रहा, here is the number. Okay, ये रहा commit id numbers. Okay, ये रहा. Okay, it will be visible here. Okay, so we can say Very top it that says yes, commit, and you have the commit ID as if well. you want to reset, if you want to previous version, okay, we can come git reset or commit, so it will come to the staging to the local as well as possible. Okay, if you want to see the difference, क्या difference है? Very difficult, okay, to read into the what we can say CLI, so हम लोग नहीं use करते हैं. Okay, हम लोग ये यहाँ पे CLI पे very difficult to use it, we will use it into the UI, हम लोग UI पे use करते हैं, it will be very easy. Okay, and if we run the git push command, what will be pushed into this repository? Okay, हाँ, interview question, git fetch, बोलो, git fetch. रिमोट हाँ चैतन्य देशमुख. रिमोट रिपोजिटरी से जो लोकल रिपोजिटरी है उसके अंदर जो लेटेस्ट आई मीन लेटेस्ट कमिट जो है इट विल fetch. Let assume Vikas, Chaitanya is writing the code. Okay, Vikas का local machine है, Chaitanya का local machine है. Chaitanya has written the code. Vikas ने कुछ code push किया. Okay, it is available in the local repository. Chaitanya has taken something, उसको और आगे लेके गया. He made this commit. Now विकास के पास already विकास का code है, and he want to change only the difference. जो difference आया चैतन्य का, he want to download that difference. Then I will run the git fetch command. Understood? So only changes will come into my account. Okay, अगर मैं clone करूंगा तो पूरा my code, everything will come again into my environment. Understood? What is the difference between fetch and clone? Interview question. What is the difference between fetch and clone? Fetch will only take the changes happen from the last commit, that will come with the fetch command. Okay, clone, everything will be get downloaded or full code will come into the system. Understood? Yes, no? So fetch and pull में difference होगा ना, मतलब there is, hello, फेच और पुल में अभी भी डाउट है. ओके, चलो आई एम कमिंग हियर. ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे. ओके, देखो अब क्या होगा, इफ यू विल सी हियर. ओके, सेम रहेगा. ओके, फेच और पुल यहाँ पे हम जो करते हैं ये सेम आएगा. ओके, बट एक्चुअली डिफरेंस होता है. यहाँ पे पुल में वो पूरा का पूरा कोड पुल कर लेता है. ओके, एंड वी हैव टू अपडेट इट अगेन. पुल के अंदर हमें अपडेट भी करना पड़ता है, फैच के अंदर अपडेट करने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? fetch में जरूरत है, pull में मर्ज कर देगा. पुल पुल में वो करेगा. लोकल रिपोजिटरी तक लेके आएगा. हाँ, पुल में लोकल, उसका जो लोकल है वो चेंज हो जाएगा ना, fetch में चेंज नहीं होगा ना. नहीं, देखो क्या होता है, पुल में वो पूरा कोड उठाता है. ओके, इट विल पुल एवरीथिंग.
ओके, वो पूरा लेके आएगा। ओके, और इफ यू विल अपडेट तब वो जाके चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। अगर फैच करोगे तो ओनली जो चेंजेस हुए हैं वही डाउनलोड होंगे। देखो, आई थिंक सैयद इज रिटन इनटू द चैट। सैयद ने कुछ चैट पे लिखा है, चलो मैं उसको नोटपैड पे लिखता हूँ। ओके, आई थिंक सैयद इज रिटन। सैयद कहाँ से लिखा है ये? चैट जीपीटी? नहीं, खुद से? चलो ठीक है। फैच ओनली चेंजेस विल बी डाउनलोड, और पुल कंप्लीट कोड डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे अपडेट भी करना पड़ेगा। Okay. Okay, cool. Alright. Guys, at this point, that's it for today. How was the session? Unmute करके बोलो कैसा लगा, समझ में आया, बहुत टफ, क्या लगा? So great session for me. Great. Okay. What about others? Great session, sir. I have to go through it once again, sir. Digesting. It's a very Me too. useful Obvious है, session for us. obvious है, obvious है। एक दिन में 1 साल का एक्सपीरियंस लिखने की हिम्मत रहती है, राइट? अच्छा चलो, हाउ मेनी आर डेवलपर्स? यहाँ पे कितने लोग डेवलपर है और ये सब नहीं आता था? हाउ मेनी आर डेवलपर्स पहले से? अरे हो यार, अब मत छुप के मत बैठो। Sir, गाइस, currently कम अप ऑन द कैमरा। we are working on-prem. So GitHub developer, I'm listening first time now. ठीक है, फर्स्ट Now, टाइम है, अच्छी बात है, ये तो न्यू लर्निंग है। yes, हाउ मेनी आर but डेवलपर्स गाइस? हाउ मेनी पीपल आर डेवलपर्स हियर? ये लोग पहले से डेवलपर हो भाई। गितेश भाई, रेस हाथ ऊपर करने से नहीं, बोल दो, कैमरे पे आके बोलो। आदित्य, कैमरे पे आके बोलो। यू आर ए डेवलपर, पहले से डेवलपर थे? Yes, me also. Yes, yes, Vikas. यू आर डेवलपर्स। ओके, यूज करते हो ये सारे कॉन्सेप्ट, पहले से पता थे? यस, नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 50-50. yes, yes. We are आंसर तो using एक भी daily. नहीं Yeah. दिया आज, आंसर तो एक भी नहीं दिया पूरे सेशन में। We are giving chance to answer to others actually. चलो cool. इसका एडवांस लेवल क्या है? व्हाट विल बी द एडवांस लेवल फॉर दिस? चलो, डेवलपर हो तो बोलो, इससे ज्यादा क्या करते हो अपनी कंपनी में? कोड के अलावा, कोड मैनेज के अलावा और क्या करते हो? बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच इन टुमारो क्लास, मैं कल पढ़ाऊंगा। गितेश, आदित्य, बोलो भाई, स्माइल मत दो यार, बोलो क्या करते हो nothing. इससे ज्यादा That's इन it. गिट और गिटहब? That's it, sir. Nothing. One mostly command use cherry pick, git cherry pick. Git ठीक cherry है, pick, चेरी Git पिक करते हो, rebase. एक कमांड चेरी पिक We हो are गया, ठीक है। And yeah. actually, Git sir, rebase. I have some confusion on rebase. ठीक है, वो मैं कल सिखाऊंगा। रीबेस, बेस, Git लिटिल Rebase is ब्रांच, फीचर complicated. Git ब्रांच, rebase. सब कल सिखाऊंगा। We can Create also जनार्दन, do कैमरे पे आके creating बोलो ना, इन we are बिटवीन मत बोलो प्लीज, मर्मरिंग साउंड होती है। creating tags for releasing the features. yes, tag we can also do. टैग्स, ओके ठीक है, टैग यूज करते हो, ये सब कल कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। वी विल यूज, कल कर लेंगे। लॉग्स कल देख लेंगे, और दैट्स इट। ओके गाइस, डन। नाउ आई विल टेल Conflict व्हाट वी आर resolve गोइंग टू resolve डिस्कस। conflicts. चलो, कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके ठीक है, वो भी कल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट। आई वॉज थिंकिंग कि आज हम लोग यहाँ तक कर लेंगे, ओके, बट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस। हम लोग स्टेज, रीसेट, बाइसेक, स्क्रैश और रीबेस मींस एडवांस लेवल फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर्स, कोई फ्रेशर डेवलपर के लिए नहीं है, 2 to 5 years के लिए नहीं है, शायद एक्सपीरियंस डेवलपर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द टुमारो क्लास। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद दिस पेक्टोरियल्स विद सम प्रैक्टिकल्स एज वेल। ओके, ये सब होगा। प्लस आई वॉन्ट यू टू I want you to download the Java also in your machine. Okay. So I am teaching today because कल से अब हमारे पास we have to take the code. आज तो हमने Hello World प्रोग्राम ले लिया, कल हम लोग एक्चुअल कोड लेंगे, कंपाइल करेंगे, बिल्ड करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ जेंकिंस वी विल इंटीग्रेट इट। अंडरस्टूड? ओके, अब ये सब ऑटोमेटिक चलेगा, अभी हम मैनुअल कर रहे हैं। वी विल मेक इट ऑटोमेशंस, वी आर गोइंग इनटू द सीआई पार्ट। सो आई वांट यू ऑल टू डाउनलोड द Java in your local machine as well. Okay, so what I'm doing it, I'm giving this link. Okay, अभी बता देता हूँ। Okay, and that is your homework also. You have to download any Java 17. Okay, Java 17 download कर लो। And how you can check it if Java is available in your machine or not? First, open the command prompt. Open your command prompt. Guys, what is the command? How can we check Java is available in the machine or not? कैसे check करते Java हैं? hyphen v Hyphen version. Java hyphen Java hyphen hyphen version. version. ओके, Java hyphen hyphen version. ओके, मेरे लैपटॉप में वर्जन 17 है। ओके, एंड यस इट शुड लुक लाइक दिस। तुम्हारे यहाँ पे भी 3 लाइन आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। Java 17 हैज टू बी अवेलेबल इन योर लैपटॉप। ओके,
तो what I did it, मैंने जो install करा है, you have to go into this link, okay, you have to go into this link, इस link पे जाना and download Windows MSI Windows install, कोई सा भी ले लेना, MSI on installer, you can take anyone from the last this, नहीं wait, JDK, हाँ JDK, okay, Java Development Kit JDK का this one or this one, anything you can take it, I am giving you directly, okay, copy link, ये link है, take it and download it in your machine और आराम से install कर लेना, okay. और in the tomorrow class we will go ahead into that part. Mac के लिए भी version same रहेगा, तो 17 version, okay, for the Mac also version 17 only, okay, cool. From tomorrow we are going move into the Jenkins side as well, okay, or environment variable setup we will do into the class, or you can take this screenshot, environment variable जो हमने Terraform का करा था on the last day of AWS, okay, तो you can set up the environment variable as well, नहीं तो कल की क्लास में मैं सेटअप करूँ, got it, हाँ it's okay, 22 है well and good, 22 है well and good, okay, if you have Java already installed in your machine no need to worry, okay, cool, and that's it for today, okay, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट हैं, I think you can have a look, अगर हाँ क्या होता है गिट, क्या होता है गिटहब, क्या होता है, कुछ पुराने पोस्ट हैं, एनीथिंग इज फाइन मैन, 17 21 सब कुछ ठीक है, क्योंकि रिवीजन तुम लोग यहाँ से कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट हैं उससे भी देख सकते हो, एक बार रीड कर लेना, जस्ट टू हेल्प यू आउट फॉर द डेफिनेशंस, ओके, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस पीपीटी, ओके, और इसका नेक्स्ट वर्जन होगा, हम लोग ब्रांच स्टडीज पढ़ेंगे, ओके, और उसके बाद हम लोग वी विल मूव इनटू द सीआई पार्ट, ओके, हम लोग सीआई के अंदर, ओके, दैट्स इट फॉर mute. Okay, guys, that's it for today. Okay, and